it is not a new concept. Mu jetki padhili, every chapter, all the 10 chapters I have covered and covered thoroughly also. Mate lagila bahut jinsa ame samaste janiche, but the way it has been written, national education policy ର ethos को नहीं जोटा लेखा अच्छी, से गुड़ा को हमको टिके because ध्यान देबा पड़े, because FLN ର जहाँ भी concept एपर्यंत FLN training ହେଇची, FLN ର short term blended course ହେଇची, FLN ର निष्ठारे ଆମେ ନେଇଛେ, FLN विषୟରେ बहुत गुड़े reading ନେଇଛେ, ECC also. So एते गुड़े experience हम पाखरे अच्छी, हमको बहुत जिनस नुआ न लगी पारे. It's natural. But the way it has been written, it's a huge document and many things have been repeated. बहुत जिनस repeat ହେଇଯାଇଛି. So पढ़िला बेलକୁ भी गोटे केमती लागि जाउछि, बेसी same thing written in different languages ए भली भाबरे. So जते precise करा जाय परियो म कहिबी, I'll finish it within 45 minutes. So if you have any point of time जहार भी घरे कोनोसी काम आसिला बा किछि भी हला, you can leave this meeting. It's purely personal, so no restriction, nothing to be worried. Do not feel that your personal time has been killed through this session. So जो मान जत्तिकी हमें एकाठी हेबा जत्तिकी समय दे पारियो, we'll do it. Okay, so I'll start with the presentation. जेतु presentation और and I will share this presentation also. So किछि सेमति लेखा लेखि करिया भी एति बेसी आवश्यक ना. After this in the evening I will share this PPT. So let हो एटा मु एपट आईडी रो जॉइन करछि परा. ओ मो मन है. ओके ठीक अछि. SCERT मेल आईडी रो माने पर्सनल मेल आईडी इट इज. Your entire screen. And screen visible होची? Yes, madam. Okay, ठीक है. आगे मैडम. Okay, ठीक है. And so we'll discuss about. I thought that is एटा अरे ICT सहित टिके sound भी voice भी मोर देइथिली. But भाबिले जिमिट रे काले voice भी एकन सास्ता को सकाळे समनाले yesterday early morning रे मु दि तीनटा slide रे voice देइथिली. मु सो भाबुची मटा को voice देई की group रे post करबी. काले Google Meet रे voice audible हबनी बोली voice छाची. So I'll prepare little bit ICT integrate करबी एथिरे करके माको PPT टा send करबी. So we'll discuss today about, as you know all of you, that is National Curriculum Framework for Foundational Stage. आमे एतले कहूचे सबो जिनसर गोटे context थाए. ए National Curriculum Framework रा context होची जे the first thing is that it is the outcome of the National Education Policy. ए पॉलिसी रे बहुत गुडे ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव ने आइछि, जेमति हमें कहिबा one of the pedagogical and curricular structure transformation ने आइछि. It's a 5+3+3+4 design. So हमें दे NEP टा को भलरे पठवा. मोर समस्त को रिक्वेस्ट, प्लीज रीड दिस स्कूल एजुकेशन. जदियो हमें बहुत PLC करिछे स्कूल लेवल ले, क्लस्टर लेवल ले, ब्लॉक लेवल ले रिगार्डिंग NEP. But still NEP the chapter school education, all the chapter 8 को हमको आहुरी तन्ना करी पढ़िया को पड़िबा. So also निपुण document and also जति हमें जिबा ministry रा website को बा NCERT website, there are so many development of NEP परे. After 2 years and 2.5 years of implementation pre बहुत गुड़े materials documents आछि जो गुड़ा कि हमें subsequent time रे PLC रे discussion करिबा. So the context is that it's a transformative, it's an outcome of this transformative initiative to meet the challenges of 21st century knowledge society. So NEP रे जो transformative initiative रे one key component of this NEP रा outcome हैला National Curriculum Framework तैयारी करिबा 4 themes रे. And one of the theme is that for the foundational stages. ए जो रिफॉर्म आसीछि, जो ट्रांसफॉर्मेशन आसीछि, एटा curriculum framework is a very very important document जोटा कि
enable kariba transformation को energize kariba a transformations को. So जदि NEP implementation the major thrust कथा कबे school education कथा रे, the national curriculum framework is the major thrust of the NEP 2020. Then, as you know, that is, we have in this document, we have 10 chapters, right from the developmental process of the ECC in India and the world, vision kon achi, how children learn at foundational stage, context of schooling is stage re kemti rahibo. What is the procedural part of the schooling at this stage? एठी मध्य आमर who are the pioneers and thinkers का कथा मध्य कुहा जायछि chapter 1 रे. There are some from right from the Savitribai Phulenko ठारू आरंभ करे टैगोर कोन कहचंती, विवेकानंद, महात्मा गांधी, अरविंदो, जिडु कृष्णमूर्ति ए समस्तंकर ए ECC वा फाउंडेशन स्टेज उपरे एंकर फिलोसफी कोन रहिछि. So also what are the current status of ECC in our Indian context? Chapter 2, this is very important. Being a diet faculty, we must understand what is the aims of education reflected in NEP 2020. So also curricular goals. See, if you go through the Nipun document, it is developmental goals and 3 goals are there. But here in curriculum framework, it is curricular goals, competencies and learning outcome. We have to be very clear what is the similarities and differences among these 4 stages. Then the chapter 3 is approaches to language education and literacy. Mostly it is our foundational literacy, it is numeracy part B integrated achi, but I do not know why it is not reflected in chapter 3, both approach to language education, literacy and numeracy rahiya katha. Kahinki nahi, I'm don't know exactly. Chapter 4 is the pedagogy. Chapter 5 is, we know that this curriculum is a totality of experiences the children get during the schooling. So it is inside and outside the school experiences. For that reason, the curriculum framework must include all these things. Choosing and organizing and contextualizing content for teaching, assessment, organizing time. If you are conducting, if the schools are from the 9 o'clock to 3 o'clock, or from 10 o'clock to 4 o'clock, how do we organize the time so that the curricular goals can be achieved during those activities to that particular time? Additional critical areas, both disease, children with special needs, the children who are migratory children, children who are staying in the geographical barrier areas. So these are the few of the, even if the in some cases it is the gender issues. So these are the critical areas. How do we address through curriculum? Chapter 9, this is very important because we have 2 curriculums in the school education. One is the foundational stage and another is the for the rest of the school education. So linkages to the preparatory stage is very important. So this curriculum is not in isolation stage, rather it has a linkage to the preparatory stage and creating a supportive ecosystem. If you want to, that is, implement the NEP in toto, that is, it's not that only the head teachers or the teachers can achieve the goal. It's the entire supportive ecosystem, maybe the academicians or the administrators who can contribute towards achieving these goals. So these are the few of these chapters we'll discuss one by one. 10 chapters are there. So the major, if you talk about the NEP 2020, एथिरे हमर इंडियन इथोस, इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन कथा बहुत बेसी रिफ्लेक्ट कराय छी. If you go back to NCF 2005, it's very structured, it's very pinpointed, it's very that is it has a different ideologies. When the NCERT has developed the 2005 ର NCF, but a NCF को देखिले हमको हमर ट्रेडिशन, कल्चर
ଏଇ କଥା ବହୁତ ବେଶୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ସୋ ଯେମିତି ପଞ୍ଚକୋଷ ବିକାଶ କଥା କୁହାଯାଇଛି, which is a keystone in our Indian tradition କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ପାଞ୍ଚଟା କୋଷ ଯଦି କହିବା, ଯେମିତି ଫିଜିକାଲ ଲେୟାର ଆମର ଅଛି, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ଟ୍ରାଡିସନ ସହିତ ମାନେ ଆମର କଲଚର ସହିତ ଇଟ୍ ଇଜ ରିଲେଟେଡ। ଫିଜିକାଲ ଲେୟାର ଅଛି, ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ଯୋଉଟା ପ୍ରାଣାୟାମ କଥା କହୁଛେ, ଲାଇଫ ଫୋର୍ସ ଏନର୍ଜି, ଯେମିତି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିକି ଆମେ ଏନର୍ଜି ପାଉଛେ, ସେମିତି ଲାଇଫ ଫୋର୍ସ ଏନର୍ଜି ଲେୟାର ଅଛି, ମାଇଣ୍ଡ ଲେୟାର ଅଛି, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲେୟାର ଅଛି, ଇନର ସେଲ୍ଫ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଇପି କହୁଛି ଯେ we want children whose development is complete, who has holistic development, so এই ପାଞ୍ଚଟା ଲେୟାର ଯୋଉ ଅଛି holistic development of a child, এই ପାଞ୍ଚଟା ଲେୟାରର nurturing ଦରକାର ହଉଛି। So foundational stage is a very very beginning stage, ଯୋଉଥିରେ ପାଞ୍ଚଟା stage କଥା, ଆମ ପାଞ୍ଚଟା ଲେୟାରର development କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। So if you can go the background, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା, ମୁଁ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କରିବି ଯେ ଆମେ first 8 years of a child's life are very very critical। ଯୋଉମାନେ ଏବେ I can talk, I can tell many of you, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପର୍ସନାଲି, ଯେମିତି ଲୋପା ହଉ, ସ୍ମିତା ହଉ, ମୌସୁମୀ ହଉ, ଶିଖା ହଉ, ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଲି, ନେବା କଥା ନୁହେଁ, ନାଁ ନେଇଗଲି ଏମିତି। they have the children who are 8 years between, in between ତାଙ୍କ ଛୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ବୟସ, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବି ଛୁଆ ମାନେ ଥିବ। remember being a mother, first 8 years of a child's life are critical। as a mother, how I'm nurturing my child, my kid, and lay the foundation for lifelong well-being। ଛୁଆ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହବ, how my mental and physical being shaped, that is decided by this first 8 years। so overall growth and development across all dimensions, ସବୁ dimension the first 8 years are very very important। and then the second ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଯେକୌଣସି ବୟସ ଅପେକ୍ଷା। so kete quality time, it is not that quantity of time I am giving 12 hours to my child, but ତା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୋର ଅଖାଡୁଆ ଉତ୍ତର, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ତୁ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, these are not expected from a mother of a child। so because এই ସମୟରେ ଆମେ ତାର ବ୍ରେନ୍ ବା ତାର ନରିଶମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହଉଛି, ତାର ଏନକ୍ୱାରି, ତାର ଏକ୍ସପୋଜର ପାଇଁ ଆମେ କେତେ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ଦଉଛେ। so during these years 3 to 8 ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଇଲ୍ଡ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଇସିସି ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ in an institutional environment। ଆମେ ଆମ ବେଳେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ, ପିଲା ଆସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡମିସନ ନଉଥିଲା, ଘରେ ପଢୁଥିଲା ତାର, ନାଇଁ, most institutional environment ପ୍ରତି ପିଲାକୁ available ହେବା ଦରକାର ଏଇ ସମୟରେ। so 3 to 6 years is early childhood programs हम जानछे, अंगनबाड़ी, बालवाटिका और प्री स्कूल जोठी भी जाहा हो। 6 to 8 years हैला ଆମର grade 1 and 2। so this is the background why we are giving so much emphasis on this foundational stage। next we have to think of what is the paradigm shift in NEP 2020 which guides the developmental process of the NCF। the first thing is that transitioning to a more multidisciplinary and holistic education। we are ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଆମ syllabus କୁ ଦେଖିବା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠକୁ ଦେଖିବା, we are concentrate on language, mathematics and so this is the thing। so if I talk about the holistic education and multidisciplinary କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର। it is not that ଯେ କେବଳ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡାକ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଗୋଲ ହଉଛି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ପିଲାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯୋଉ ପିଲା he or she must be a good human being। ସେ ଗୋଟେ capable ହଉଥିବ independent rational thought, because the word rational is very important।
आमे एबी भी rationally thinking करि पारु ना हो आमे bias thinking कोच मते जोटा सुहेला से भली चिंताधारा से भली कथा मु कोच no NEP has taken very clearly that the child must be capable of independent rational thought and action खाली thought कले हबो नै मते मो action रे मते rationality देखिया पड़िया what we are lacking माने बहुत बेसी हमको जदि if you reflect on our inner self and the child must be compassionate and ता पाखरे human quality रहितिबा दरकार से courageously काम करथो दरकार ता पाखरे गुटे creative imagination रहिबा दरकार so these are the things जते हम transitioning to a more disciplinary and holistic education कथा सेतेबेले एई कथाटी हमको चिंता करियाको पड़िबो जे करिकुलर अदर करिकुलर एक्टिविटी एकेडमिक वोकेशनल एजुकेशन एठी छुआ मानकर एठी फाउंडेशन स्टेज वोकेशन माने नुए जे सिलाई करिबा बा टाइपिंग करबा एगुडा वोकेशन माने हला मोटी छोट गछटे भी लगाई देली गछरे पानी देली इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर जोटा हमर प्रथम द्वितीय श्रेणी छुआंक कथरे मध्य सो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहिबा दरकार that is oral written examinations madhyare second hela critical and analytical thinking upre gurutwa dia jwa dakar amo NCA ba amo state curriculum framework e bhali bhabare heba dakar the children can get maximum opportunity for critical and analytical thinking pai then third hela amo jo curricular and pedagogical structure jota achi ଯେମିତି फाउंडेशनल स्टेज रे टिके फ्लेक्सिबल रहइबा आमे जानि छै एटा प्ले बेस्ड लर्निंग रहइबा once we move to the preparatory stage mostly discovery and activity based learning आर कुचिबा मिडिल स्टेज को गला को केमती डिस्कशन मोर हबा मोर एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट को केमती सिखा दिबा जते बेले सेकेंडरी स्टेज हबा सेते बेले को चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स आसी जिबा पिलर abstraction को बेसी फोकस कर so it is like this transitioning हमको नुआ curricular and pedagogical structure नेबा को पड़ियो and so जिते बेले हमें so now we'll focus on NEP 2020 रे ECC पाई कोन गाइडिंग प्रिंसिपल कुआ अछि जोटे कि हमें प्राय जानि छ just it's a recapitulations so the first thing is that हमको देखिया पड़िबो जे प्रत्येक पिला यूनिवर्सल प्रोविजनिंग पाइबा दरकार ECC एवं तारे पांच तरह डेवलपमेंट हेबा दरकार physical motor cognitive socio emotional ethical cultural artistic communication early language literacy numeracy तर एतके जिनसता डेवलपमेंट हेबा दरकार गोल हमर एटा हमको ए जिनसटा को से आंगनबाड़ी हो बालवाटिका हो आम कॉन्टेक्स्ट रे पिला को फ्लेक्सिबल मल्टी फेसेटेड मल्टी लेवल लर्निंग प्ले बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड ए सब जिनस एनक्वायरी बेस्ड लर्निंग करे पड़ो कोन करिबा ना लैंग्वेज पथा किछि रहइबा नंबर कथा किछि रहइबा काउंटिंग रहइबा इंडोर आउटडोर खेल रहइबा किछि पजल रहइबा लॉजिकल थिंकिंग रहइबा प्रॉब्लम सॉल्विंग रहइबा चित्र पित्र आंकिबा रहइबा ड्रामा करिवे किछि पपेट्री हबो भल व्यवहार शिखिबे केमति छुआ माने केमति दल रे काम करिबा सेटा शिखिबे सहयोगी मनोभाव एई भलिया गुणावली गुडाक मध्ये ए काम थ्रू रे एटा हम गोल होछि हम छुआंकु एई भली आमे गुणावली रा विकास करिया रे ए स्टेजेस रे दिस आर द फाउंडेशन थिंग when you go back to ताहाले हमर गाइडिंग प्रिंसिपल एटा त गला गोल गला से गोल आधार रे गाइडिंग प्रिंसिपल्स कोन अछि जानी छे बट वेरी इंपोर्टेंट as a teacher educator आमे तले सियासी का कथा कथा बा ते मेंटरिंग रे जाउचे टीचर्स को पाको जाउचे as a teacher educator माने मो बिलीव करूची तो every child is capable of learning regardless of circumstances of birth or background मु जो घरे जन्म नहीं थाए बा जो परिवेश रे मु बढ़ी थाए I am capable of learning this is very important and we must have believed that every child is different they grow different they learn different they develop differently at their own pace
So these are the principles of developing a curriculum. Children are natural researchers. କେତେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର opportunity ଦଉଛେ, they have a very very great observational skills. मोबाइल रे आमे कोटा को टक कले गूगल खोलुची, कोटा को टिक कले प्ले स्टोर खोलुची, टच कले जे चिल्ड्रन हमको थरे देखि के से ताको कर दउछ हम घरे जो माने को छुआ माने थिबे. So they are natural researchers. Man देखि देखि के मोबाइल को छुई ताको जोटा भल लागुची केते कथा कर दउछ. They are the constructors of their own learning experiences. They express feelings and ideas through different representations. हमको जति कुहा जीव सेशन गोटे ने, we have a fixed mindset. ए भली भाबरे में सेशन टी नेबो. But they have ideas that in their case the ideas comes through different representations. कोठी केतबेले पिक्टोरियल नेले त, केतबेले गीतरे नेले त, केतबेले माटी चकटी. So they want to things in a very very different way. Children are social being. So हमको एटा बिलीव करा हमें तंको काम दे दो एकुटिया. They learn through observations, imitations and collaborations. Children learn through concrete experiences, using their senses and acting upon the environment. Then children experiences and ways of learning must be acknowledged and included. पिला माने केतेबेले भलरे सिखंती जदि हमें कथा हबा पिला केतेबेले भलरे मु त एटा इंटरैक्टिव करि पारु नाही कने किए केतेबेले ऑन करिवे had it been a physical session हम इंटरैक्टिव करथांते तम माने बोर फील करन तो just say yes. ना मैडम. ना मैडम. नहीं मैडम. नहीं मैडम. Okay, ठीक है, good, thank you. So children पिला मानकर केते बेले छुआटी भलरे सिखे, मैक्सिमम केते बेले सिखे जेतल ताको हमें रेस्पेक्ट हो, जेतले हमें ताको से जेतले लर्निंग प्रोसेस रे फुल्ली इन्वॉल्व थाए. That is important. As a teacher, when I am observing the class, सेतले मो छुआंको से क्लास से पढुथुवा पिलांको रेस्पेक्ट दिया उचित. आदे सेमानकर वॉइसेस गुडा का क्लास से सुभुचित. सेमानकर एक्सपीरियंसेस को बा बढ़िया कहिलु, बहुत सुंदर तोर अनुभूति कली मेला जाइतलु, आ एते बढ़िया खाइलु. These are very very simple constructive feedback, but it impacts hugely on children's minds. So we have to think while developing curriculum or transacting syllabus or developing textbooks. So that is the thing. So textbook development, it should be loads of case studies of the children, so that the children can connect with the textbooks only when another child's experience from Malkangiri, from Nabrangpur, from Kodda, from Baripada are reflected in the textbook. So that is the thing. While developing textbook, we have to be very very critical. We have to be very very conscious about the children's. So that is the thing. Then play and activity. I'm समझते are the primary ways of learning and development. हमको छुआ को कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटी दिया जाबक पड़ियो. पिला एक्सपीरियंस करू, एक्सप्लोर करू, एक्सपेरिमेंट करू एनवायरनमेंट सहित, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्ले सहित. सो पिला माने निहाती रूपे विभिन्न प्रकार सामग्री, शिक्षण कार्य, एनवायरनमेंट सहित एंगेज होगा दरकार, which are culturally appropriate and develop conceptual understanding and problem solving. जहाँ भी कंटेंट आमे बही रे रखिबा, that should जोटा मैं कहि सच्ची, that should be drawn from the experience of the children. The challenge हम पाके रहउची जे पिलांकर परिचित अनुभूति को आमे केते बेसी श्रेणी कक्ष को बा पुस्तक को पारुछे. पिलांकर पिलांको बहुत गुडा जिनस रे अपॉर्चुनिटी देबा दरकार. Several opportunities of the fantasy, storytelling, art, music, play, equity issue को much address कर दका. Gender, caste, class एवढा equity issue को मु quick करीबी और तांको facilitate करिया को दरकार पिलांका learning को. Remember one thing, while developing the state curriculum framework or जेतबेले आमे FLN grade को
mentoring रे जाउचे scaffolding is very important. So scaffolding must be provided by asking many open-ended of questions, enabling them to explore many things. Scaffolding re mostly ame open-ended questions ku deba. I'll also parabati paja scaffolding with detail alochana karibi. We can never forget the family and community partners, community को a foundational stage रे include करिया पाए. This is very, very important. This is very, very important. Care is the central to learning. As a teacher, ଆମକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ସେନ୍ସିଟିଭ ହେବାକୁ ପଡିବ, ବହୁତ ବେଶୀ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ ହେବାକୁ ପଡିବ ପିଲାର need and moods of the children. Classroom activities must emphasize the emotional aspect of the learning. Maybe through storytelling ame kari pariba, craft madhyamare, play madhyamare, but this is very, very important. Children must not feel isolated in financial sense. Coast stages will be isolated feel kariba katha nuhe, but at this young age re care is very important, loving is very important. If as a teacher, if I do not love the children, if I do not know the needs of the children, the likings of the children, only thing I know to complete the syllabus, or only thing I know the way which is suitable to me for teaching and learning, that way mu patha padhaibi, then maybe we are missing large chunks of children in our country towards being a good human being later on. जदि मु छुआ को भल पाई नहीं, जदि मु छुआ को प्रशंसा करी नहीं, जदि मु छुआ को सम्मान देई नहीं, ताहाले छुआ शिखिबो नहीं सम्मान देबा, प्रशंसा करिबा, अन्य को जत्न नेबा. So that should be the crux of the curriculum development at our state level. So how children learn at the foundational stage? बहुत बड़ा जिनसे तुम मैंने जानी छ पिला माने, but जानी ले भी ताकु लेखिबा, ताकु कहिबा, ताकु internalize करिबा is very important. So आमे इतले पिलांग कथा कहूचे, पिला केमते सिखे? The belief is that children are natural learners. That is the thing. प्रत्येक शिक्षार्थी जने जने स्वाभाविक शिक्षार्थी से माने स्वाभाविक ढंग रे सिखंती. They are active, eager to learn, respond with interest new things. तांका पाखरे innate sense of curiosity थाए. से माने प्रश्न पचारंती, से माने explore करंती, से माने नुआ जिनस को try out करंती, से माने discover करंती world विषय रे. So amo kamo hela as a teacher educator tankara curiosity ki nurture kariba ebang tanku loads of opportunity deba to continue to discover and learn many more things in school and out of schools. So that is our responsibility, to nurture their curiosity. Second is children learn best ei boysare chua mane kemti sikhanti, play खेलिकी एक्टिविटी करिकी निजे काम करिकी सिखंती. सो केमती सने डेमे को भल पांती, क्रॉल करिया को भल पांती, बैलेंस करिया को भल पांती, रिपीटेशंस करिया को भल पांती, राइम करंती, कथा हुंती, प्रश्न पचारंती, रीजन करंती, एई गुडा को सब से मान करंती. सो जदि आकु आमे समराइज करिबा, दे लर्न केमती सिखंती से माने ना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. मु काम करी सिखिबी, सामग्री व्यवहार करी सिखिबी, खोजी के सिखिबी, परीक्षा करी के सिखिबी, कथा कही के सिखिबी, एभली गुडाए बाटरे मु सिखिबी. So these are the preliminary things जोडा हमर एनसीएफ रे रहिछि, रहिबा आवश्यक. Then the curriculum and pedagogy. प्रथम कथा हला एई करिकुलम रे बहुत गुरुत्व दिया जाइछि इंडियन लोकल कॉन्टेक्स्ट इथोस को नै. Our culture, our tradition, our heritage, our language, our philosophy, our geography, our ancient and contemporary knowledge, our societal needs, our traditional ways of learning, जेमती आमे गुरुकुल आश्रम जेमती सिखुतिले, ए सबु गुडाका आम पाइन दरकार. एई माध्यम रे छुआटी सिखिले रिसर्च कहूची
पिला माने ए माध्यम रे सिखिले दे कैन रिलेट, द लर्निंग कैन बी रेलिवेंट, it can be interesting, it can be effective for the children. So एगुड़ा को हमको ध्यान देना पड़ेगा. When we are developing the syllabus, when we are developing the curriculum, when we are interacting with the children in the classroom, we have to take care of all these things. If the ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ କୁଇ ଭାଷାର ପିଲାଟିଏ ବା ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ କଣଟା ସେଟା ସୌରା ସୌରା ଇଜ ଗଜପତି ଆମର ଏଠି କଣଟା ଅଛି ସାନ୍ତାଳ ଭାଷା ସାନ୍ତାଳି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସାନ୍ତାଳ ଭାଷା ଅଫ ଦିସ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ so their culture, their knowledge, ତାଙ୍କର societal values, ତାଙ୍କର indigenous ways of learning ଏ ସବୁକୁ ମତେ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ. We can develop some case studies, maybe 2-3 languages, maybe 2-3 traditions. Likewise, the teachers can connect with it because we cannot give all kinds of experience in textbook. But it can be more or less, we can give some caselets, some examples so that the teachers or the children can relate with it. Stories, arts, games, sports, examples, these are the chosen to be written. ए सब जिनस को हमको करिवाको पड़िबो. So then all languages must be welcomed and celebrated in the classroom. केते सुंदर कथाटा लेखा आइछ. Because छुआटिए फाउंडेशनल स्टेज से बहुत बेसी एक्सप्रेस करिबो ओरली. से कथा हबो, इंटरैक्ट करिबो, सिखिबो तार ओन होम लैंग्वेज रे. सो मु जदि ओडिया रे कहिबी आमे मेंटरिंग रे क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट रे देखलु 9% ऑफ द स्कूल्स रे होम लैंग्वेज रे कहिया को लाउ करना द टीचर्स. So think of it. So all languages must be celebrated in the classroom. Stories एगुड़ा को सब जते ड्रामा बे सब जिनस लोकल एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे दैट लैंग्वेज लर्निंग को जदि आमे चाहू से फन करिया पई एक्साइटिंग करिया को रेलेवेंट करिया पई ताहाले हमको ए सब जिनस माध्यम रे सिखिया को पड़िछ. सो नेक्स्ट इज एटा हला गोटे चारटा लर्निंग स्टैंडर्ड्स कथा बतन मु कहूची. लर्निंग स्टैंडर्ड्स रे ए चारटा कथा को आमे टिके सुनिबा. So first learning standards, so first one is the aims of education. So आमे जानि छे जे प्रत्येक जगह रे हमर एम हमर रहिछि. हमर एतले करिकुलम बा आमे एतले तयारी करूछे सेतबेले हमकु एम्स इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. सो ए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मध्य एम टी रखिछि. कोन से एम रखछि ना एम्स ना एजुकेशनल विजन स्टेटमेंट that gives a broad direction to all deliberate efforts of the educational system. ता माने ए aims of education गोटे vision statement दिए. जेमती कि मु कहितिली जे हमर एनईपी रे aims of education कोन लेखा अछि. जदि हम एनईपी को पढिबा the aim of education system हमर देश रे रहुछि जे to develop good human being. जेटा म आगुरु कहिसछि कोभली गुड ह्यूमन बीइंग कहिला में कोन बुझुची ना जे रैशनली चिंता करि पथुओ, रैशनली काम करूथुबो, जहा पाखरे गोटे कंपैशनेट कोन हार्ट एंड माइंड थिबो, एम्पैथी संवेदनशीलता जे थिबेतिबो, जहा पाखरे करेज थिबो, साइंटिफिक टेम्प एगुडा कला हमर एम्स ऑफ एजुकेशन. आउर गुडे अछि मु जानिछि जे अब तमे माने पढिले जानि परिबो जे हमर aim होछि to produce human being but citizens हम एभली citizens produce करिबा who can be engaged हे परिबे, productive हे परिबे, contribute करि परिबे हमर कंट्री रो डेवलपमेंट पाए. so that is aims of education. हमर वर्तमान जदि हमके aims of education के पचारे तल आज पर NEP 2020 अनुसारे एम हला या. सो करिकुलर एम मध्य सेम. सो इट्स जोटे कि ब्रॉड डायरेक्शंस दोछि कहा पई ना ए एम्स ऑफ एजुकेशन में करिकुलम डेवलपमेंट पई डायरेक्शन दोछि. एम्स को नै कि करिकुलम तयारी हेबो, को भई भाबरे इंस्टीट्यूशंस हम कंट्री रे रहिबो, फंडिंग केमति दिया जिवो, फाइनेंसिंग केमति करा जिवो,
people लोक मानकर कैपेसिटी केमती डेवलप करा जिवो ये सब कथा एम्स ऑफ एजुकेशन हमकु निर्देश दउची दिग्दर्शन दउची दिग दउची. So that is AIMS of it. So AIMS is the first learning standards, but learning strand of first level is AIMS of education. Second is curricular goals. So curricular goals है गोटे statement जोटा कि derive होइछि कोठु ना AIMS of education रो एवं जोटा direction दउछि को भली भाबरे हमर curriculum देशरे बा राज्यरे तयारी हबो एवं ताकू कि भली भाबरे आमे इम्प्लीमेंट करिबा. That is curricular goals. जदि आमर गोल रहल बा एम रहला जोटा मु आगुरु कहउतिली एनईपी अनुसारे प्रोड्यूस ए गुड ह्यूमन बीइंग कैपेबल ऑफ रैशनल थॉट एक्शंस ऑल दिस थिंग्स जोटा कहि सच्ची तले करिकुलर गोल रो गोटे एग्जांपल कोन होची ना आमे गोटे गोल कथा दिखबा जे छुआ मानक भितरे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करिबा सो दैट से माने सेमानक भितरे लोकंक सहित सांग सहित टीचर्स को सहित बापू मां को सहित से माने टू लैंग्वेजेस रे वन इज देयर होम लैंग्वेज एंड अनदर लैंग्वेज दे कैन चूज एनी L2 भितरे कथा है. सो दैट इज द वन ऑफ द करिकुलर गोल्स ऑफ द फाउंडेशनल स्टेज जे पिलांक भितरे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करिया फॉर डे टू डे इंटरेक्शंस इन टू लैंग्वेजेस. दैट इज आवर करिकुलर गोल्स. सो ताले एम्स ऑफ एजुकेशन रु आमे आसले करिकुलर गोल्स को करिकुलर गोल है डायरेक्शन से करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंट तापरे असला कॉम्पिटेंसी गुडा को कोठु असला ना से गुडा को असला करिकुलर गोल है सो कॉम्पिटेंसीज गुडा का these are the learning achievement जोटा कि गोल रो डिराइव करा हिची and expected by the end of a particular stage. By the end of the foundational stage, so competencies are for a stage but for a year. जे it is derived from the curricular goals हमें जानिले एवं by the end of a stage it have which can be observable, measurable so that we can assess competencies. मु एग्जांपल दे कि परे कथा आइछि भी that एठो हमर डिराइव हैला लर्निंग आउटकम्स. सो कॉम्पिटेंसी हमें कहिले गोटे कॉम्पिटेंसी हुए तो ताको हासिल करिया को 2 मास लागि पारे 6 मास लागि पारे वर्ष हे पारे. सो इट्स अ वेरी ब्रॉड व्हाट इज एंड ऑफ अ स्टेज हे पारे. सेति पय लर्निंग आउटकम्स गुडा का आसिला बिकॉज़ हमें कहूचे कॉम्पिटेंसीज केते बळे इट अटेन्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बट हम ते एते समय रहि परिबा नहीं. प्रतिदिन हमको देखिबार अछि छुआ केते सिखिला 2 दिन ने थरे देखियार अछि बिकॉज़ असेसमेंट इज कंटीन्यूअस इन नेचर. फॉर दैट रीजन गुड इंटरिम मेकर्स है interim makers learning outcomes are the interim makers of learning achievements. कहीं के दरकार होची ना to observe and track learning and respond to the needs of the learners continually. हमको जेतु प्रतिदिन प्रति अल्टरनेट डेज प्रति पीरियड रे असेस करे को जतले कॉम्पिटेंसी देले त हमर हबनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हबो. सो द इंटरिम अरेंजमेंट हमें कल दैट इंटरिम अरेंजमेंट इज लर्निंग आउटकम. So a learning outcome kono na as a teacher it enabled me to plan my content, to plan the classroom transactions, to plan for the assessment. ए जो 45 मिनट बा घंटा करा क्लास नेबी बा 1.5 घंटा रा क्लास नेबी एथिरे मु को लर्निंग आउटकम नेबी ता पई मु कोन कंटेंट तयारी करिबी बहिरो को टेक्स्ट को नेबी सेति पई कोन पेडागोजी यूज करिबी सेति पई कोन असेसमेंट करिबी so that after certain learning outcomes children can achieve that particular competency. So that is the thing amku dekhiya ko padiba. For that reason I am giving you one example jothre ame aims katha ko bhalare janiche ame tara curricular goal ko buझिबा competency को बुझिबा learning outcome को बुझिबा. One of the curriculum goal hela जे पिला माने फ्लुएंटली निज घर भाषा रे पढ़ी पारिबे लेखि पारिबे. L1 रे हैला children develop fluency in reading and writing in
L1 language 1 सो ताकू नहीं कि मते कॉम्पिटेंसी तैयारी करिवार अछि एटा हला मोर गोल हासिल करिवार अछि कॉम्पिटेंसी कोन हला पढिबे लिखिबे दीटा कथा कहि देछि गोल रे सो चिल कॉम्पिटेंसी हला शॉर्ट स्टोरी को पिला माने पढिबे एवं तार मीनिंग को कॉम्प्रिहेंड करिवे गोटे कॉम्पिटेंसी नेले आ गोटे कॉम्पिटेंसी राइटिंग भी हे पारे सो ताकू नहीं कि आउटकम बाहर करिवे आउटकम हला कोन ना कहना हमें कहली कोन ना छोट छोट स्टोरी को छुआ पढ़ी परिबे और कॉम्प्रिहेंड कर परिबे एटा हला कॉम्पिटेंसी सो मे बी कंपेयर लर्निंग आउटकम हला जे छोट पिक्चर बही को पढ़ी पर रीड पिक्चर बुक्स एंड आइडेंटिफाइज तार के कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करि पाछि ताकू नैरेट करि पाछि जहा को पढ़िला ताकू से नैरेट करि पारुछि रीड अलाउड विथ बड़ पार्टी स्पष्ट भाव में पढ़ी पारुछि ताकू these are all learning outcomes I'm giving the examples of learning ताकू पढ़ी के छोट छोट शॉर्ट स्टोरी की पढ़ी छोट छोट प्रश्न र उत्तर दे पारुछि सेथिरे जो अनदर लर्निंग आउटकम में भी थाई पारे बही को पढ़ी की सॉरी शॉर्ट स्टोरी को पढ़ी की तार कैरेक्टर गुडा को आइडेंटिफाई करी की ताकू सीक्वेंस वे रे सजाई पाछु so these are the learning outcomes so these are the four strands or the standards of learning as per NCF 2000 sorry कौन कहि NCF for the foundational stage so this is very important हमको ए विषय टिके पढ़िबार अछि then I will go kete time hela so I'll be little bit faster so the key principles guda kachi chatta measure chatta ne actually it is 5 principles first thing is that these two principles that merge hechi children को हमें जेतु माने 8 वर्ष भीतर चिल्ला माने बहुत फास्टली तांकर कथा कहंती तेणु आमको तांकर से ओरल लैंग्वेज ऊपर टिके डेवलप करे पड़ो मल्टीलिंगुअलिज्म हैज बोथ द कॉग्निटिव एंड सोसाइटल और कल्चरल बेनिफिट अछि नंबर 2 के प्रिंसिपल्स हला पिला माने नेचुरली छोट बॉयस रु तांकर निज भाषा रे कहंती सेति पाई रिटन लैंग्वेज टिके नेचुरली परे हमें आनिबा किंतु once the children are very fluent in the spoken language we can move to the reading and writing part and the third thing is that jehetu ame kahuche non trivial concepts ko more quickly and deeply pila tankara home language sikhanti and cultural awareness expressions eguda ko amku gurutto deba ko padibo when we were developing CF in language education so एटा होम लैंग्वेज रे हबो मल्टीपल और सब बड़ पई एनसीएफ रे कहछि जे छोट छुआ माने केवल निज भाषा रे कहिबे नाही आउ दुई तीनटा भाषा मध्ये से माने सिखि परिबे at least 2 languages in oral form that is the thing reading रे प्रथमे R1 रे करिबे तापरे they can also move to other languages R2 R3 other languages करबे reading and writing because एई स्टेज रे छुआ माने बहु भाषा रे से माने ग्राफ्स कर पने एबे हमको गोटे तेलुगु सिखिया पाई बा गुजराती सिखिया को हमको बहुत कष्ट हबो but children at that age below 8 they can learn 2 3 4 languages very easily research says it is not I am not saying it research says so we have to agency guda ko bahut sigra kariya padibo ebang by class 3 every child must be an independent reader and writer that is important independency rahiba darkar jota ame koche scaffolding ro बा ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पांसिबिलिटी जीआरआर जोटा कहूचे जो माने ब्लेंडेड कोर्स करथुए से मान भी जानचंती सो से थ्रू हमको केमती मूव करिके फाइनल स्टेज को इंडिपेंडेंट रीडर को आनिबे द पेडागोजी इज सेफ सिक्योर कंफर्टेबल एंड हैप्पी क्लासरूम एनवायरनमेंट देबा केयर एंड रिस्पांसिव देबा छुआ को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देबा एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोर करिया पई these are the principles play is central to learning and development एटा सब बेले मन रखिबा काहे कि ना पिला सिखिला केमती सिखे पिला एतले खेलु थाए कोन केमती सिखे खेलु खेलु ट्रायल एंड एरर सिखि जाए रीजन करे लॉजिकल रीजन करे लुडू खेला खेला केते पिला गंडोलिया करे खो खो खेला बेले से कहथु एटा ठीक बिकॉज़ द लॉजिकल इज द एस्टैब्लिश करिबो
कम्युनिकेट करे पिला खेलला बेले पिला सैटिस्फाइड है खेलला बेले जीतू कि हारू बहुत बेसी सैटिस्फाइड हुए पिलार नर्वस नर्व गुड़ा को एक्टिवेट हुए पिला गुटे जॉय पाए सेंस ऑफ रिलैक्सेशन हुए पिला बहुत क्रिएटिव फील करे. So there are so many advantages of a play उपरे गोटे दिटा चैप्टर एटी एनसीईआरटी पे अछि. फ्री प्ले हे पारे, गाइडेड प्ले हे पारे, स्ट्रक्चर्ड प्ले हे पारे. स्ट्रक्चर्ड प्ले मोस्टली टीचर डायरेक्टेड. So play is the central to learning and development. Physical development is also very important. Classroom process says address all domains of development. जो पांचटा कथा कहली physical, motor, creative, aesthetic development, intellectual, mental, ये सब development, socio emotional, ethical development, ये सब cognitive, ये सब को classroom process देबाक पड़ियो. Safe and stimulating environment, physical and emotional safety and security is very very important in foundational stage. We have to think physical emotional is very very important. The children must feel respect and valued. Pilanku prasansa kariba, recognition deba is very important in this stage. Then the learning experiences in the classroom are deeply connected in children's lives and their context. More foundational stage re gote pilatie achi tik kandhamal re Jagannatha mandira bisare jete kahile. It is an abstract, it is not connected to the child's life. So child life सहित मते सेही पूरी जगन्नाथ मंदिर में कही सेही गाँ रे थिबा मंदिर सहित मते कनेक्ट करिया पड़िबो. That is the thing. It should be built on child's previous understanding सहित. This is very important. As a teacher, am I listening carefully to the children and responding? So that builds the relationship between teacher and children. এটা ବହୁତ ବଡ଼ କଥା. ଛୁଆଙ୍କୁ ଶୁଣିବା, deep listening. Hearing is a big red cross mark for the children. That is the first step for nurturing relationship is listening very deeply and carefully to the children and respond them. Every child learns at their own pace and learning needs are addressed individually. Children must feel comfortable. So these are the principles for classroom planning and instruction. যেটা আমি lesson plan তে তৈরি করছে, instruction design করছে, we have to think of these critical. এটাকে শুনিয়াକୁ ବହୁତ ସରଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, but while designing the classroom instruction planning, ପିଲାର experience କୁ ନେଇକି plan କରିବି, ପିଲାର all domains of development କୁ ନେବି, ପିଲାର own pace ରେ ଯିବା ପାଇଁ so many of activities design କରିବି जो ପିଲା first learner ତା ପାଇଁ ଗୁଡେ activity ରଖିବି, ଯେ slow learners ତା ପାଇଁ different kinds of activity ରଖିବି. So this sounds very good and very easy, very simple, but really implement in the classroom, it really requires skill, it requires belongingness, it requires love and care for the children, for the profession, and for the self and professional development ପାଇଁ ଏଗୁଡାକ ଦରକାର ଅଛି. So planning for teaching बेलको हमको mostly include करिया पड़ियो छुआ शिखे कि भली भाबरे. छुआ खेली की सिखुची, छुआ कथाबार्ता करी सिखुची, छुआ स्टोरी टेलिंग करी सिखुची, छुआ टॉय खेली करी सिखुची, गीत शुणी की सिखुची, आर्ट एंड क्राफ्ट करी सिखुची, इंडोर आउटडोर गेम करी सिखुची, नेचर सहित समय कटे की सिखुची, छुआ फील्ड ट्रिप करी सिखुची. There are so many ways of learning. So when you are planning for the teaching, so ଏଇଭଳି କାମ ଗୁଡାକୁ ଯାହା ମୁଁ କହିଗଲି ଏବେ, we have to construction and organization of classroom task. କୋଉଟା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, କୋଉ କାମଟାକୁ ପିଲାକୁ ଖେଳନା ଦେଇକି ଖେଳି ମାଧ୍ୟମ ଶିଖିବ, କି art and craft. So construction and organizing of the classroom task is very important. को pedagogy follow करिबो, कौन resources use करिबो, कौन assessment नेबी. So the planning also includes supportive activities for the children, home assignment, displays in the class. So planning बेले गुडाक मते विचार करिया पड़िबो. Major components कथा एठी कहैछि. प्रथम हला कौन competency learning objectives, more intended lesson objectives कौन रहिबो, ताकू हम the major components.
Is it a teacher directed class or teacher guided class or child led activities? That thing we have to decide. Then, what is the duration and sequence of activities? What classroom arrangement, sitting arrangement केमती करी, display arrangement कौन करी, material कोठी रखिबी, कौन strategy नेबी जो मन extra help नौचंती, what should be our method of assessment, ये सबु कथा को मोर teaching plan ने रखिबी, and content and material कौन मु use करीबी. Learning process रे ए पांचटा कथा कहछि, introduction, conceptual understanding, practice ପାଇଁ कौन रखिबी, applications कौन करीबी, expansions कौन करीबी, बा आमे तार that is elaborate कौन करीबी ताकू देख से content ने. So planning part रे differentiated instruction is very very important because we कौन में कहूचे every child is unique and every child experience every children has diverse learning experiences. So for that reason, planning for differentiated instruction is very important. Scaffolding and gradual release of first, शिक्षक करिबे, I do, teacher, I demonstrate, I explain, I model the main ideas and skills. Step 2, we, the teacher and the children, we work together. Third thing is the independent learner, you do, the children practice or do the work and gather skills independently. So we have to make the children as an independent learner. So gradual release of responsibility is very important for the teacher. आमको ए 3 नंबर पाखरे पहुंचेवार अछि छुआंकु. Homework, remember for the foundation stage homework is only for the fun. No structured homework shall be given during this foundational stage. Then this is a building positive relationship between teachers and children. Getting to know each other, very important. Listening to children, observing children, encouraging children, school or jaha kichi kamo pai encouraging children kariba, recognizing and responding children's emotions, visiting their homes regularly. Then batan literacy numeracy part ko asiba, quickly jibi je samaste FLN training neichanti. आमर अर्ली इयर्स रे आमर निश्चित भाव छुआंकु बहुत अपॉर्चुनिटी दिया जिबा दरकार, भल रीडर एवं राइटर बा कथा, बैलेंस करे एक लोअर ऑर्डर स्किल्स रे लिटरेसी रे लोअर ऑर्डर स्किल समस्त जानिछ तम माने फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, डिकोडिंग, राइटिंग वर्ड्स एंड लेटर्स करेक्टली एगुडा कला सब कोन लोअर ऑर्डर स्किल्स. हायर ऑर्डर स्किल्स गुडा कोन हैला ना ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, निज मनरू मु कहूथिबी, बही पढ़ी पारुथिबी, निज मु लिखि पारुथिबी, ओरिजिनल राइटिंग से कॉपी पेस्ट नुहे, क्रिएटिव राइटिंग इज हायर ऑर्डर स्किल्स विथ मीनिंग फोकस्ड थिबस, दैट इज द थिंग. लिटरेसी, इमर्जेंट लिटरेसी समस्त जानिचंती, इमर्जेंट लिटरेसी हैला इमर्जेंट रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स. इमर्जेंट लिटरेसी कोन हैला जे पिला पढ़िबा पूर्वरु गोटे फ्लुएंट रीडर हेबा पूर्वरु, फ्लुएंट राइटर हेबा पूर्वरु जो स्किल नॉलेज एंड एटीट्यूड को एक्वायर करे, दैट इज इमर्जेंट लिटरेसी. सेटा केमिति हासिल करा जे ना प्रिंट अवेयरनेस, प्रिटेंड रीडर्स, छुआ मान को देखिथिबे घरे जो माने मदर्स माने मां माने, मदर्स हो कहबिनी, मदर हो कि मौसी हो कि जहां भी हो ना कि कुड़ी हो कि बड़मा हो, खाली माँ कहले हबने. We are because taking into my case, so आमे देखि जे छुआ केमती बाली रे गारा फर पके स्क्रिबलिंग कर दिए, ड्राइंग कर दिए, प्रिटेंड रीडिंग किछि आथो माँ बही धरी बसतो, माने 2 वर्ष छुआ से भी गोटे बही को उल्टा धरी की बसतो, प्रिटेंड रीडिंग. All this comes under emergent literacy. Oral language development, phonological awareness, decoding, reading with comprehension, fluent reading, writing, developing a desire and habit of learning. Samasta training nature FLN upare मैं कुछ detailing करबिनी. And then balanced literacy approach जोठी जहाँ 4 block because Dhir Jhingran sir, the founder director of Language and Learning Foundation, he has written this chapter. So all LLF ra jaha hamara input Odisha government schools man ko jaichi, all are reflected in this national curriculum framework for foundational stage. Oral language, word recognition, reading and writing, ए सबु जाक जहाँ हमर इनपुट जाइछि सबु जाक अछि.
Then we'll come back to the teaching mathematics, little bit different as because Akshara Raja input sides little bit in a different nomenclature teaching mathematics katha kuhaichi. First thing is that approaches to teaching mathematics, developing mathematical abstract ideas as concepts through concrete experience. ଏଠି ଗୋଟେ ELPS ମଡେଲ କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁମରେସିରେ CRA methods concrete representations and abstract କଥା କହୁଛେ ଅକ୍ଷରାର ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୋଉଟା CRA approach କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ NCF ରେ କୁହାଯାଇଛି ELPS approach. What is that ELPS approach? E is for the experience, learning mathematical concepts of concrete objects को जमती आमे पत्र देकी छुआ को गणिया पे कहबा चारटा पत्र देकी तू गणि की कह दैट इज एक्सपीरियंस पिला गादन करलो तापरे ला स्पोकन लैंग्वेज जोटा की कहिला सेटा से कहबो जे मु तीनोटी पत्र गणिली 1 2 3 तीनटी पत्र कहिला ई रे एल रे स्पोकन लैंग्वेज पी रे थ्रू पिक्चर्स जहां मु कहिली जदि मु तीनटा पत्र को आंकी माने कौन गणिची गणिकी कहिची ताहले ताकू तीनटा पत्र जोटी चित्र अछि मु ताकू मेंशन करि पथि बा तीनटा पत्र त मु आंकी परिबिनी वे त क्लास 1 पिला की सीसी स्टेज बा मु पत्र आंकी आकुली से जेभली भाबरे आंकू पछे तीनटा को से देखै पतुबो तापरे रिटन सिंबल से ताकू से तीन आकर 3 जोटा सिंबल ताकू नै से देखै पतुबो so this is ELPS model. Then concrete connecting mathematics learning with child's real life and prior knowledge सहित mathematics को केमते हमें problem solving tool व्यवहार करिबा mathematical talk, mathematical communication, mathematical language, mathematical reasoning ए सब रो develop करिबा and mathematics रो phobia रो के भली भाबरे हमें दूरे रहि कि गोटे positive attitudes towards learning mathematics develop करिबा से कथा मध्य आलोचना हेछि कंपोनेंट्स ने एटा मध्य मु कहिबी नाही एटा मु जस्ट स्किप करि जाउची एई भली जेहेतु सॉरी एई भली जहा एटा एडा सब हमर एफएलएन रो न्यूमरेसी रे सब जिंस अछि तेनु मे विषय जम्मा डिटेलिंग करूनी खाली ए चारटा ब्लॉक कथा कुहाई छै जेमति 4 ब्लॉक्स हमर लैंग्वेज लर्निंग रे 4 ब्लॉक्स कथा जेमति मु आलोचना करिथिली जे ओरल लैंग्वेज डिकोडिंग रीडिंग एंड राइटिंग से भली भाबरे ब्लॉक 1 रे ओरल मैथमेटिक्स ब्लॉक्स न्यूमरेसी पई अछि जोथरे मैथमेटिकल पोएम्स ओरल कैलकुलेशंस छुआ करिबो चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस को कहिबो एटा सब दिन हबो वार्म अप एक्टिविटी हमें ओरली कर परिबा ब्लॉक 2 वाला स्किल्स टीचिंग कंबाइनिंग ऑल स्ट्रैंड्स मैथमेटिकल कांसेप्ट्स को टीचिंग करा जिवो से प्रॉब्लम सॉल्विंग रहइबो जोटा हमें जीआरआर प्रिंसिपल्स कोचे ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अप्रोच रे ए ब्लॉक 2 टा करा जिवो ब्लॉक 3 हला स्किल्स प्रैक्टिस जहां में मैथमेटिकल टास्क अछि वर्कबुक थ्रू रे टेक्स्ट बुक थ्रू रे टीचर क्रिएटेड टास्क्स थ्रू रे पिला माने प्रैक्टिस स्किल पाइने काम करिवे 4 नंबर टा हला ब्लॉक 4 टा हला मोस्टली मैथमेटिकल गेम्स कथा कबे कजे जोता तांकर पिला मानकर मैथमेटिकल लर्निंग को स्ट्रेंथन करिया पे गेम्स थ्रू रे करिवे सो दैट पिलांकर गेम मैथमेटिकल गेम खेली की पिलांकर प्रॉब्लम सॉल्विंग conceptual clarity सब जिनस हबो एवं every day it will be 60 minutes mathematical class हबो करजबो then we're coming when will be very fast organizing the environment sitting arrangement कथा कहछि no fixed sitting नाही flexible हबो केतबळे individual sitting हबो केतबळे print sorry pair केतबळे group केतबळे whole class देखि कि sitting arrangement हबो displays and print rich environment रहबो जोटा कि छुआंक द्वारा accessible हबो एवं comprehensible आमर द्वितीय श्रेणी छुआ बसिथिबे किंतु चतुर्थ श्रेणी लेखा आइथिबो पिला किछि पढि पान नथिबे आम क्लास मान करे नो the print rich environment must be accessible and comprehensible for that grade children